जब बच्चे थे तो ऐसी बातें सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे कि कुछ ममालिक और शहर चंद महीनों के लिए बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं। तो तब ये सब नावल लगता था। और फिर निज़ाम कुदरत देखिए कि एक दिन हम उसी नावल का एक मेन किरदार बन के रह गए। We call this novel place our lovely home. It gave us love, respect, and dignity, and above all, it accepted us with open arms and open heart. All right, one, two, three. ये कहानी है अमेरिका के मिडवेस्ट में वाक़े एक बहुत ही प्यारी स्टेट मिनेसोटा की। इट्स अ स्टेट विद कोल्ड वेदर बट वार्म हार्ट्स। तो आइए आपको इसके विंटर की एक झलक दिखाते हैं। Assalamu alaikum, what's up guys? A big snowstorm has been sweeping through half of the United States from the last couple days और इस बर्फ़बारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हुआ है। पिछले चंद दिनों से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। So we'll show you guys what it looks like outside. People have been stuck at home. हम लोग भी अभी पिछले 3-4 दिन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। We have been lucky enough to be able to work from home और रोड की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं बाहर और काफ़ी लोग घरों में स्टक हुए हुए हैं. So we'll show you guys what it looks like outside. We'll show you how we cleared that snow and how we live in those extreme weather conditions. So let's get started. That's a lot of snow there. And look at it here. Good 3 feet. कम से कम 2 से 3 फुट तो होगी और पूरा फर्नीचर कवर हो गया है यहाँ पे डेक पे. Crazy. First of all, we need a good winter jacket, good snow pants जिसमें हम लोग snow में बाहर जा सकें, and good winter shoes. So let's get dressed. Just like that. और हाँ, ये grip मत भूलिएगा. It will keep you safe. It will keep you away from doctor's bills. कि हड्डियाँ तोड़ना मना है. इतनी oh man. Look at that here. ये यहाँ पे एक स्टेप था तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी और ये ऊपर जो है ना awning भी है. So you want to show them up there? Like this is just blown off due to wind. ये हवा की वजह से यहाँ पे है, हालांकि ऊपर छत है इसके. So it was blowing so hard it stuck on the house. yeah, holy cow! Look at that here. Oh man. So it's like almost 18-19 inches. ये तकरीबन 20 इंच के करीब है. 1.5 से 2 फुट बन ही जाती है ये. अब आते हैं एक सीरियस टॉपिक की तरफ. From the last few decades, the world has seen some extreme weather conditions, including rising sea levels, rising temperatures, messing up the ecosystem, earthquakes, floods, you name it, we have seen it. Oh, yeah, sure, we can just call it an act of God because it's always easy to blame God. An act of God or our own stupidity? I'll let you decide for yourself. I think we know the answer. जहाँ पे एक तरफ 28 स्टेट्स में 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ पड़ रही है और एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस जहाँ पे पिछले 50 साल में कभी बर्फ़ नहीं पड़ी. एंड दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे 80 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि 30 डिग्री सेल्सियस है, इतना टेम्परेचर है. What's happening? Is that the kind of world that we want to leave for our future generations? I don't think so. Anyways, enough of this serious talk. Let's have some fun. क्योंकि ज़िंदगी नाम ही enjoyment का है.
Ah! Lorena is a hardy Minnesotan. You need to have fun with it. Yes, you do. Woo! Soft landing. Soft landing. ये यहाँ पे used to है, so that's how they play with the snow. Ah, how does it feel? Refreshing. Refreshing. No, she wants me to do it too, so I gotta. Ooh, it's cold. Huh? All right, 1, 2, 3. Woo! Oh man. Getting up is the hard. No, I can't even get up. Oh god. It does feel refreshing actually. Makes you feel like a kid again. अच्छा लग रहा है यहाँ पे ज़रा ना बंदा फ्रेश हो जाता है. हवा नहीं इतनी चल रही, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो it's okay to do it. Oh, let's get up. Oh God. चलो जी, शरारतें ख़त्म करते हैं और अभी इसको ना क्लियर करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं कि ये क्लियर कैसे करते हैं. So let's get started. Let's clear this snow. I actually don't mind clearing snow. If it's powdery, अगर powdery है वो wet किस्म की नहीं है, so it's actually a lot of fun. और मेरा snow blower भी बड़ा heavy किस्म का है, so it actually throws pretty far away, so it's a lot of fun. But if it's wet, barf, that's not fun. जब दिन की रोशनी शाम में ढलना शुरू हो जाती है तो रात की ये मसनूई रोशनियाँ इस बर्फ़ से ढके शहर का एक अपना ही दिलफ्रेब मंज़र पेश करती हैं. मैं हमेशा से इस मंज़र का दिल दादा रहा हूँ and I will always be in love with it no matter what. अब आप सोच रहे होंगे भाई ये सब तो ठीक है, but how do people live and function here? I think that's a valid question. जिंदा कौमें इस तरह की चीज़ों को अपनी कामयाबी में आड़े नहीं आने देती. When the society as a whole takes responsibility, nothing is impossible. टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे को पता है कि कितनी स्नो पड़नी है. हम लोग अपनी ड्राइवे क्लियर करते हैं, साइड वॉक्स क्लियर करते हैं, सिटी अपनी स्ट्रीट्स को क्लियर करती है, उस पर सॉल्ट डाल रहे हैं और उसको ड्राइवेबल कंडीशन में लेके आ रहे हैं. सो दैट्स हाउ जस्ट फंक्शनल सोसाइटीज़ वर्क. अरे यार फिर सीरियस हो गया. लेट्स गेट बैक टू वर्क. वी नीड टू कीप क्लियरिंग आवर ड्राइववे. लेकिन कुछ लोग हैं ना, इस काम को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और बोरिंग ही बना देते हैं. वी आर नॉट अमंग्स दोज पीपल. काम है, करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट we'll have fun with it. We're not gonna make it boring. बर्फ़ को ऊंचा ऊंचा उड़ाएं, स्लो मोशन में उड़ाएं, उसके साथ खेलें, एंजॉय करें. क्या है, 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे ना. That's called life, man. It's okay. सिटी है ना सीरियस लेने के लिए अपने काम को. Oh no, city people, please do take it seriously. साल्ट अच्छी तरह से लगाएं, अच्छी तरह से रोड्स को क्लियर करें, because lives are at stake. और यार वाइफ की ऑर्डर आ गई कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, ड्राइवर को जल्दी से क्लियर करो. तो हमने कौन से उसके ऑर्डर सर माथे पे रख लेने हैं. करनी तो अपनी मर्जी है ना. बच्चों की तरह खेलें, कूदें, एंजॉय करें. दैट्स लाइफ, दैट्स व्हाट इज गोना कीप यू यंग. जब बोर हो गए तो गए ना. याद है ना, जिंदगी नाम एंजॉयमेंट का है. Life is a race, just like this hyperlapse.
especially for those of us who live in the industrial world. सोसाइटी के प्रेशर की वजह से और हाइपरलैप्स की वजह से हम 4 दिन की ज़िंदगी को भी एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं. Remember, the winners will be those जो कि इस 4 दिन की ज़िंदगी को स्लो मोशन में कन्वर्ट करके बजाय इसके कि हाइपरलैप्स के 100 दिन की ज़िंदगी में कन्वर्ट करेंगे. सिर्फ उसकी कंडीशन ये है कि वो फुलफिलमेंट वाली ज़िंदगी हो. Remember, we have choices. As you sow, so shall you reap. Too much ice. Huh? There's so much ice in your hair. Ooh, boy. And the whole driveway is cleared, just like that. ऐसी कोई बात नहीं है जी. आई विश कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती और इतनी आसानी से ये सारा कुछ क्लियर हो जाता. ये पूरे 2 घंटे की मेहनत और 2-3 साल्ट के बैग डालने के बाद का नतीजा है. That's it for today, guys. Hopefully आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा. We'll see you in another video. तब तक के लिए अपने करीबी दोस्तों का, हमसायों का, सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हंसते रहें, खुश रहें. तब तक के लिए peace out. Like, subscribe और share करें.